There's a rule to have a Frankie, ठीक है? ऐसे खड़े रहो। Okay. इसको ऐसे 45 हाँ, इसको ऐसे 45 डिग्री पे लो। पूछो क्यों? मेरा ऐसे कैसे कटा है? ऐसे? ओहो। ओहो। यार इतने साल हो गए पर उसकी टेस्ट नहीं बदली। No, I'm so glad you got me here. And I'm so sad कि मैं माहिम में नहीं रहती। और ये देखो ये ग्रेवी पूरा ब्रेड में पाव में चली गई है। It becomes like an अंडा ऑमलेट पराठा और उसमें ये रोल कर दिया है। And mine looks like there is a skewer going through this kebab. मैं खाऊं? तो आपने हमको ऑलमोस्ट सब जगह पे देख लिया है, बट अभी हम हैं मुंबई में। हम आ गए अपने घर, तो मुंबई में हम क्या खाएंगे? इट रन्स ऑन वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव, भेलपुरी, सेव पूरी एंड रोल्स। कौन सा रोल्स करेंगे? कम। प्रवाशांनी कृपया काळजीपूर्वक रांगेत उतरावे। पुढील स्टेशन वांद्रे। So Prachi, so this is the first place. और like you were saying, पता है बाहर खड़े रह के किसी को, if someone's coming for the first time, coming over here for the first time, like Prachi was saying कि बाहर खड़े रह के किसी को पता नहीं चला कि अंदर ये तो ऐसा मैदान है और यहाँ पे बेकरी है। Why I thought we should start with this place is that because जो भी हर्ष बेकरी आया है ना, I think everyone's got a story. Yeah. उनके टीनेज की, उनके कॉलेज डेज की, उनके फर्स्ट रोमांस की या फर्स्ट डेट की। My story is that so we used to go to Joggers Park in the morning. Okay. और वहाँ से हम वापस जॉग करते करते यहाँ पे आते थे। And at about 7:38 in the morning, maybe 9 o'clock in the morning, burgers, rolls, lemonade इनका। Yeah. So my memory is first time my boyfriend and now my husband Nagesh got me here on a date. He introduced me to this place and it was a total pocket friendly place for us college students at that time. So it's a very very sweet memory for me. Also यहाँ पे हमारी ऐसी कोई खास कोई इज्जत नहीं है, किसी की भी नहीं है। फूड ब्लॉगर्स हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ पे तो शूट करना भी अलाउड नहीं है, बट वी आर डूइंग इट। Hi. You have a mutton roll? We'll have 2 mutton rolls. 2. And you have the lemonade? Yes, please. So we are standing at the premises of Hearsch Bakery क्योंकि अंदर खाना और शूट करना अलाउड नहीं है। बट और हमने ट्राई किया था, वी वर ट्राइंग टू बी रिबेल्स बट वी गॉट शूड ऑफ। तो हम बाहर गली में फुटपाथ पे खड़े होके खा रहे हैं एंड दैट इज एक्चुअली दैट्स मोर नॉस्टैल्जिक। या इट्स ओके आई गेस। सो यू नो व्हाट दिस आल्सो रिमाइंड्स मी कि स्कूल में ऐसे जब हम हॉट डॉग्स बोल नहीं सकते थे, हम हॉट डॉग बोलते थे ना। दिस वाज आवर हॉट डॉग इन स्कूल, हॉट डॉग्स। It's a mutton keema gravy stuffed in long pav. It smells great and it's warm, huh? मतलब it came to my hand, it was pretty warm. यार इतने साल हो गए पर उसकी टेस्ट नहीं बदली। Classic onion gravy. Not too spicy. स्वीटनेस जो ग्रेवी से आ रहा है वो ऑनियन से आ रहा है। मटन कीमा है तो पाव ज़्यादा है और ग्रेवी ज़्यादा है, बहुत टेस्टी है और जो ब्रेड है ना बहुत टेस्टी है। Itself the bread is tasty. Nice and fluffy. It's a nearly century old place. 100 साल में उनका nearly नहीं 1914 में खुला था, 109 years old. Okay, 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वो अपने पाव्स बेक कर रहे हैं, उसमें मसाले वाले कीमे भर रहे हैं और कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। तो अगर आपको ओरिजिनल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यू मस्ट कम टू J Hearsch and Company. It's a German name,
Hearsch, started by a German gentleman. German gentleman, yes. And run by an East Indian East Bandra Indian family Catholic now. family, I think so. For many years. And this is that typical, I don't want to say Goan Catholic, but East Indian Goan Catholic वाला जो flavor आ रहा है ना? मतलब बेकरी वाला रोल है ये. That typical हाँ. thing, if you know what I'm talking about. Yeah. If you know what we are talking about. ऐसे नहीं कि मीट नहीं है ये देखो. But it's so this side- finely minced, I think, कि वो खाते वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि आप मीट खा रहे हो, है ना? It's yum man. और ये देखो ये ग्रेवी पूरा ब्रेड में पाव में चली गई है. हर्ष बेकरी में बहुत लिमिटेड आइटम्स मिलते थे एक ज़माने में. बर्गर, much before all the burger chains came to our city, right? हर्ष बेकरी में बर्गर मिलता था एक ऐसे बड़े से बॉक्स में और साइड में पोटैटो वेफर्स चिप्स के साथ. It used to be a major attraction. And that mayonnaise जो पता The नहीं house वो- mayo that house they have, mayo, yeah. right? But this is one kind of nostalgia. मगर आज हमारा जो episode roll हो रहा है. I will tell you. Now, right now we are in my front yard. Now we go to my backyard. अभी हम माहिम जाएंगे और हम वहाँ पे एक और रोल खाएंगे. I will tell you. Come. तो प्राची अभी लिटरली तू मेरे इलाके में है. Yes, तो अभी क्या खाना है कैसे खाना है जस्ट लीव इट अप टू मी. totally. I will order and you will just eat I will only eat and appreciate. and appreciate. So this is Shree's Frankie. It is actually Nandadeep Biscuit Mart, but about 40-45 years से ये चल रहा है. ये लोग बिस्किट्स पहले बेचते थे and about 30 years is what I remember कि यहाँ पे Frankie, because I've been eating since 30 years and अभी ऑर्डर करते हैं. बहादुर my friend, he's been serving me नमस्ते. for serving us 12-15 साल 12 साल हो गया है. Wow. तो एक तो मेरा वाला Frankie. Okay, there is a Frankie called मेरा वाला Frankie. Mohit That is is ordering because he मेरा knows वाला what I Frankie. eat. That's why. उसको पता है मैं क्या खाता हूँ. थोड़ा सा स्पाइसी रखना उसको. ठीक है. और मैडम को सरप्राइज देते हैं. क्या ऑर्डर किया? सरप्राइज. ये है फ्रैंकी. Two things. One is that Frankie नाम कैसे पड़ा. So there was this gentleman by the name of Amarjeet Singh Tibb. वो गया था Beirut in the 1960s and I think he had a falafel roll. Yeah. तो उसने बोला ये तो solid idea है. बॉम्बे में आके करना चाहिए. So he did this. So Tibb तो नाम वैसे पड़ा. Tibbs. Correct. It's Frankie. But why Frankie? Why Frankie? Because- Frankly, why is it called Frankie? Because he was a fan of the West Indian cricket player called Frank Worrell. Wow. Hence Frankie. तो उनको क्रिकेट के लिए कोई याद रखे ना रखे. Yes. अब बॉम्बे में उनका नाम अमर हो गया because of अमरजीत. Oh my god. So and second thing, there's a rule to have a Frankie. ठीक है, ऐसे खड़े रहो. Okay. इसको ऐसे Leg 45 position जरूरी है? हाँ, इसको ऐसे 45 डिग्री पे लो. पूछो क्यों? क्यों? So when you bite into it, अगर गिरेगा तो यहाँ गिरेगा. वाह, मुझे So लगा it's कोई like this. क्रिकेटिंग पोजीशन दिखा रहा है. But can I? Is good? वैसे तेरा तो बैकयार्ड है, तुझे तो पता ही है how it's gonna taste, but I'm kind of going to unravel because there looks like एक लेस के रैपर में दिया हुआ है. So let me guess, इसमें वेस्ट इंडीज हॉट एंड स्वीट चिली लेस है. है. Proof of the pudding is in the eating. In this case, the Frankie. अभी मेरी फ्रैंकी में ये चिप्स, लेस के चिप्स का पोर्शन आ रहा है. So I am dying for that crunch, which I'm sure is going to send me to West Indies.
Mohit, I'm so glad you got me here. And I'm so sad कि मैं माहिम में नहीं रहती. बहुत amazing है यार. तो इसमें रोटी है, इसमें एग है, इसमें अनियन है, इसमें चिकन ग्रेवी है, चटनी है. तो ये फुल मील है. And मेरे वाले में चिप्स भी है. A crispy surprise. Yeah, totally. So the cool thing about the Frankie is, unlike it being like a dry kebab roti roll, this has a gravy filling in it. Okay, that is the cool part of the Mumbai Frankie. It has runny gravy inside. और वो जो चिकन का जो ग्रेवी है ना, the taste doesn't stop. It just वो कंटिन्यू होता रहता है. इस ये द चिकन ग्रेवी स्पाइसी है, थोड़ा सा उसमें वो विनेगर डालते तो टैंग है. अनियन का एक अच्छा क्रंच है. रोटी क्वेश्चनेबल है बट 55 रुपीस में मतलब. क्यों क्वेश्चनेबल क्यों? एक्चुअली इसमें मजा इसीलिए आता है कि वो अंडा डालते हैं ऑन द रोटी एंड इट्स लाइक अ पराठा स्लैश ऑमलेट that soaks up the gravy. Also, you will not believe it. So, right there is Hinduja Hospital. I have seen doctors in their white coats and nurses and everyone coming over here. Truly. So are you trying to suggest it's very healthy? Well, it's healthy for the pocket. It's healthy for the pocket. Oi, It's a tradition. what did you get out of your back pocket? It's cocoa, cold, basically chocolate milkshake. It's a tradition to have this with the Frankie. I think Mohit is regressing back to his boyhood. Absolutely, स्कूल absolutely. से निकला, फ्रैंकी खाया, फिर कोको पिया. ये स्कूल से एक ही नहीं, है? डॉन बॉस्को से नहीं. मेरे लिए आज बहुत सरप्राइज है मेरे लिए. Good, no? Oh my god. Oh my god. ये इतना भी अच्छा फ्लेवर नहीं है. It's just nostalgia that we are doing. No, इसके बाद ये अमेजिंग है. इसके बाद ये रिक्वायर्ड है. पुढील स्टेशन अंधेरी. तो प्राची अभी दोपहर से शाम हो गई है. हमारा ये लास्ट स्टॉप है. एंड दिस अगेन इज a place where I wanted to get you. Kusum rolls. So I know what to order and you can ask me. I what will to experiment. order. Sure. तो सर एक डबल मटन सिंगल एग और इनको आप बताइए क्या खाना चाहिए. Chicken egg. चिकन एग. So chicken egg it is. हाँ. So, प्राची ये है ना, ये जो इसे काट के दिया है ना, वो जस्टिस नहीं कर रहा है रोल को. This is the size of the roll. Oh man, yeah. This is the size of the roll. और मैं एक बात बताऊँ, कैलकाटा में इससे थोड़ा सा बड़ा होता है. अच्छा. But ये मेरा बॉम्बे ऐसे है कैसे तो- कटा है? ऐसे. triangle. ओहो. ओहो. So I am starting with the double mutton single egg and before we start ये देखो कितने onions and capsicum and फिर से भरा हुआ है. Yeah. So I was watching उनका जो तवा है, बस वहाँ पर तेल में they were first sauteing the chicken और the meat pieces, फिर उसके ऊपर onion sauté कर रहे थे, उसके साथ capsicum sauté कर रहे थे. कोई भी ग्रेवी नहीं थी and that is then wrapped in a पराठा जिसके ऊपर एक अंडा फोड़ के flip करके cook the अंडा. It becomes like an अंडा omelette पराठा और उसमें ये रोल कर दिया है. And mine looks like there is a skewer going through this kebab. मैं खाऊं? Yes. Oh wow. Mm? It has no gravy, but I'm not missing the gravy at all. It's such juicy filling with the onions and the meat. It's very good. सबसे best, I'll tell you what is the best part for me at least in this is कि वो onion का जो crunchy जो bite आ रहा ना, it just the juices of the meat have gone inside the onion. Salivating while talking. And the onion is also giving it a nice caramelized, Yes, it sweet is.
taste. So I'll tell you what I am personally missing is that Calcutta का जो rolls है ना वो थोड़ा और spicy रखते हैं वो लोग. But I think यहाँ पे to Suit the palate of the population around here, थोड़ा सा उसको tone down किया है. But it's still giving the feel. Yeah, it's a very very filling meal मेरे ख्याल से. If you're longing to eat something quick, non messy, just grab this roll and it's very very wholesome. तो मटन के अच्छे large pieces of mutton है जिसका bite आ रहा है, chunky pieces. And I'm assuming chicken में भी same है, because वो दिख रहा है ना? Actually, I want to deconstruct this roll a little bit. तो आपको पता चले कि अंदर क्या है. Here you go. So it's loads of onion and such big chunks of meat that have gone into this egg-lined roti. Mutton Kathi Rolls. It's very good. But दोनों में literally कोई फर्क नहीं है except that this is mutton and chicken. And that is chicken. और ये थोड़ा सा मुझे और juicy लग रहा है. They've somehow retained the juices of the chicken. Yeah. जो बहुत अच्छा है. And the sweetish taste of the onion and the capsicum is going better with the chicken than with the mutton. Although, I believe mutton is the original. It is. It is the OG. Okay, chalo. Time for report card. Hearsch Bakery mutton roll. Hearsch Bakery mutton roll was 7.5 on 10. 9. The Bombay Frankie. With the chips, 8. 10. वो तेरा Mahim, तेरा backyard है your partial. 10. Kathi Roll. 7.5. 7.5. I agree. So we rolled well today. We rolled well, yes. Now we need And to... we rocked and rolled and Yes. all the puns that we can use. After the roll, we need to wrap. So let's wrap. On that wrapping note, like, comment, share, subscribe, and if you want a version 2 of the rolls, if you think we've missed some nice roll places, please comment, हमको बताएं और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है? क्या है? Like us on Instagram. And follow us on Instagram. Boss, Frankie hands down, huh? Frankie hands down. Extremely, maybe biased, but boss, Frankie is Also, Frankie. it's the end of the day. We are not in a position to appreciate much more. I will never say that. Come on. I can say that. If I had eaten this first thing in the morning, I would have liked it more. It's because I did like it actually. So I'll tell you what. अभी चलते हैं माहिम और फिर से Frankie खाते हैं. नहीं, see, I'll be मार ही डालोगे? keeping my bias and my nostalgia aside. That Frankie का जो that lingering taste that keeps running in The your... Frankie masala Yeah. is not there in any other roll. It's not. Frankie masala is Frankie masala. Exactly. Combination of Szechuan and cheese coming together is